example I'm about to give you, if it makes so much logic. In first place, Allah says, I blow my nur into Adam, my ruh into him, and he becomes alive. Then he says, in the same way, I brought Isa to life. हिस्ट्री के अंदर वी डोंट सी ईसा बीइंग बोर्न विथ अ क्ले, मट्टी से नहीं बनाया था ईसा को। आदम के लिए कहा कि उसको मट्टी से बनाया, लेकिन यहाँ पर है कि मैंने दोनों को मट्टी से बनाया था। नॉट ओनली अल्लाह सेइंग दैट कि मैंने इनको मट्टी से बनाया और अपनी रूह उसके अंदर फूंक दी तो ये जिंदा हो गए। नाउ ईसा इज सेइंग कि मैं भी मट्टी से परिंदे बनाता हूँ। ईसा सेइंग I take the clay and make the bird out of them, and when I blow my nur into him, they fly away. और वही बीमारों को संजाई देता है और मुर्दों को जिंदा करता है। ये तो अल्लाह का काम नहीं है जिंदा करना। But here, Isa is doing that. Isa is doing what Allah was doing. You know why? Allah is al-Hayy, वो जिंदा है तो दूसरों को जिंदा कर सकता है। Because Isa was alive, he was able to bring other people to alive. आज इमाम हमको इसलिए जिंदा कर सकते हैं क्योंकि ट्रू मीनिंग में इमाम is alive. So he can bring us to life. Let's take the example of a mother. A living mother can bring a living child to this world. कोई कहे कि ओ मेरी माँ तो गुजर गई, ओ मेरी माँ को भी एक बेटा पैदा हुआ. Not possible. Because she is not alive, she cannot give a birth to a live child. Only a living mother can give a birth to a living child. If Allah gives life to Jesus, and Jesus can give life to the people, won't that be true for us today? यहाँ के खुदा ने अपना माइंड चेंज कर लिया है. Yesterday, God can bring Jesus to life, and He can bring people to life, but that was yesterday. What about today? I thought this Quran, this Ginan, this Farman are for us, for today's guidance. This should apply to us today. So where is that Jesus who's going to bring people to life? Who is that Jesus today? Who is that Allah today who's bringing Adam and Jesus to life today? फरमाया कि मैंने मट्टी से उनको बनाया. Remember? अगर हम बहुत कुछ है तो मौला को कुछ करने की जरूरत नहीं है. जब हम कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो मट्टी के बराबर हूँ, तो वो अपना नूर हम में डाल देगा, वो हमें अपनी रूह फूंक देगा. So we may become alive. Matti is an example of a mu'min. And clay, the kichar, the gili matti, the clay is the example of a mu'min with the knowledge. मट्टी आज खुद नहीं जिंदा होती है, उसमें पहले पानी डाला जाता है, उसका गाढ़ा बनाया जाता है, कीचड़ बनाया जाता है. Make a clay out of that soil, and then with the clay he fashioned Adam, he fashioned Jesus, and he can fashion you today. If he could do it yesterday, he could do it today. But we must and must and must become the dust for him to pour his knowledge into it. And then, जब हम मट्टी से कीचड़ बन जाएंगे, we become a clay, then he can mold us. So what do we need? We need a moment, or we need to become a moment. We need to get some water
some knowledge, and then Allah does his part. But we need to do that first. Remember, you help me, I will help you. What does Allah say? I cannot help you if you don't help me. You need to help me by becoming the dust. And then I will help you if you have the water, the knowledge. And then once you have those two things, he does his part. फिर खुदा क्या बोलता है? मैं अपने दोनों हाथों से तुमको बनाऊंगा. If you remember the beginning of this lecture, we said, if we think that we work hard and we can get to that position or the level, we are mistaken. It is Him who walks us on that path. खुदा फरमाता है कि मैं अपने दोनों हाथों से तुमको बनाऊंगा. He will take us to the next level. Without Him, we cannot get to the next level. So we need to understand that it's not me, it's not I. It is Him, and we, together, we can go forward. जी, और कौन सा रेफरेंस बाकी था यहाँ पर? बस यहाँ पे अंधों की मिसाल की हम बात कर सकते हैं कि इल्म से आंखें खुलती हैं. जी, तो यहाँ पर एक और कि खुदावंद ताला उन लोगों की मज़ामत करता है. He is talking about those people who are blind. That they are blind here and they will be blind there. This is so unfair of Allah. First, He doesn't give them eyes. लेकिन Jesus आता है and He gives them eyes. Remember, we just were listening to this ayat in which says कि ईसा जो है वो पैदाइशी अंधों को आंखें बख्शता था. So first God does not give you eyes, and then He says what? If you are blind here, you will be blind there. So unfair. So what is He saying? He is not unfair, right? He's Rahman and Rahim. So क्या बोलता है वो? अगर तुमने जानबूझ के अपनी आंखें यहाँ पर बंद रखी, अपने इमाम के दीदार को यहाँ पर जुटलाया, if you intentionally close your eyes here, if you intentionally close your eyes to the didar of the imam here, then you also be blind on the other side and you will not have the didar of imam. जब आप मर जाओगे आपको इमाम का दीदार नहीं होगा. क्यों? कि आपने इस तरफ इमाम के दीदार को जुटलाया था. तो कौन से अंधे हैं ये? The one who intentionally अपनी आंखें इमाम के दीदार से बंद करता है. किस तरह? कौन आदमी ऐसा है जो अपनी आंखें इमाम के दीदार से बंद करता है? कौन है? Have you ever met any person like that? जो बोला मेरे को इमाम के दीदार नहीं करना है. नहीं ना? Sometimes it is not verbally we say that I'm going to close my eyes for the didar of imam. It's not our action. हमारी दो ज़बानें हैं. हमारी एक ये ज़बान है और एक हमारे एक्शन है ना, वो भी एक ज़बान है. हमारे एक्शन से हम बोलते हैं कि मुझे इमाम का दीदार नहीं करना है. When do we have those actions? कभी हम ऐसे एक्शन करते हैं जब हम बोलते हैं कि हम इमाम के दीदार से हमको दूर जाना है. जब इमाम की कोई बात करता है आपके सामने, आप दूर भागते हैं. Now you can say, oh yes, I have met a lot of people like that. कि जब हम इमाम की बात करते हैं तो दूर भाग जाते हैं. ऐसे लोग तो हमको बहुत मिलते हैं. With their action they are saying what? I don't want imam didar. जब आप उसके सामने गॉसिपिंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, तो वो आपके करीब आते हैं.
जब आप उसके साथ इमाम की बात करते हैं तो आपसे दूर जाते हैं. With their action they are saying that we don't want didar of the imam. They have intentionally closed their eyes and have become blind on this side. And Allah is warning them, if you are blind on this side, you will be blind on the other side. Unless you let Jesus of the time, the Imam of the time, the Allah of the time, open your eyes, give you the eyes, so you may see the Imam on this side. So today, we can say that we are trying to become alive, and the जिंदगी क्या है? वो है जिस वक्त हमने इमाम को याद कर लिया. The life is the time that we remember Allah, we remember Mullah, we talk about Imam, we talk about ilm, we talk about ibadat, we talk about Jamaat Khana. All those times that we are in His presence, in His remembrance, in His didar, in His closeness, are the time जब हम जिंदा हैं. तो इंशाल्लाह हम कह सकते हैं कि we are trying to become alive today. And inshallah, if that is the case, then Allah is Mehban, is Rahman and Rahim, is most merciful. He will make us alive. He will give us their eyes so we may see Him on this side. And be assured, हमको मरने की ज़रूरत नहीं है इमाम को दीदार को पहुँचने के लिए. We don't need to die to become one with the Imam. You can become one with the Imam as our Peer has done it before us, and they were just like us, with the 2 feet and 2 hands and 2 eyes and 2 ears, just like us. If they can do it with the Imam's Isme Azam, then we can do it with the Imam's Isme Azam. Because Isme Azam is that word जो मुला फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ उसको ज़िंदा करूँ तो मैं कह देता हूँ कुन, मैं बोलता हूँ अपना इसमें आज़म तो वो ज़िंदा हो जाते हैं. So inshallah, if there is a question here or if you wanted to add something, then let's do that. आपकी इजाज़त से कुछ इनाम करना चाहूँगी. जी जी जी. एजी हईड़े के भीतर अगन जलती रे पिया, हईड़े के भीतर अगन जलती सो तू ही बुझावण हार रे मेहरबान मेरे साहेब मेरे दयावंत जी ऐसा मैं जानती तो चलने ना देती पिया, ऐसा मैं जानती तो चलने चलती तुम्हारे साथ रे मेहरबान मेरे साथ
याशा तुझ्या विना सोदी न जावे वो कैसा प्रियाची. शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह. जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सर, आपने कहा कि खुदा ने ईसा को अपने दो हाथों से जो है वो बनाया. पूरी तरह दो हाथों की तावील जरा अगर आप दे सके तो प्लीज. जी. एनी अदर क्वेश्चन? तो खुदा के दो हाथ. सबसे पहले खुदा के लिए हाथों का तस्वुर करना हमारे लिए मुश्किल है. क्यों? कि खुदावंद ताला वो नूर मुजर्रद है. नूर मुजर्रद एक ऐसा टर्म है जो शायद हमारी लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलता है हमको. नूर मुजर्रद, द टर्म नूर मुजर्रद इज a nur which we cannot reach nor understand nor comprehend nor can see. नूर मुजर्रद एक ऐसे नूर को कहते हैं कि जिस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, जिसको हम अपने ख्यालात के इहाते के अंदर नहीं ला सकते हैं और ना ही जिसको हम देख सकते हैं. वो खुदा है. तो फिर उसका दो हाथों का तस्वुर करना बड़ा ही अजीब है कि हम कहें कि खुदा ने अपने दो हाथों से उसको बूंदा. लेकिन खुदावंद ताला एग्जैक्टली यही फरमाते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों से इनको बनाया. ये खुदा के दो हाथ, खुदा की दो ताकतें हैं. पहले हम उसको बातिन के लेवल पे लेंगे और उसके बाद हम उसको ज़ाहिर के लेवल पे लेंगे. Those are the two powers of Allah. One, the right hand is his akle kul and the left hand is nafse kul. The universal intellect and the universal soul. अब उसको हम ज़ाहिर में देखते हैं. जब खुदा कहता है कि मैंने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया, खुदा फरमाते हैं कि मैंने अपने यूनिवर्सल इंटेलेक्ट यानी कि ईमान से बनाया. मैंने उसको अपने यूनिवर्सल सोल पीठ से उसको तालीमात दी और मैंने इन दोनों हस्तियों को यूज़ करके ए ईसा, ए आदम तुझे बनाया. शापी. क्यों? कि ये कहना कि खुदा के दो हाथ हैं और फिर ये कहना कि खुदा एक ऐसी हस्ती है कि जो अबा ऑल एल्स है, उसको किसी चीज़ से हम जोड़ नहीं सकते हैं. तो फिर खुदा के दो हाथों का तस्वुर भी हमारे लिए नामुमकिन होगा. लेकिन विद द इमाम्स तालीमात, with the Peer's Talimat, with the Dai's Talimat, we understood that two hands of Allah are His Imam and His Peers. From those two hands, आज भी वो ईसा बनाता होगा, आज भी वो आदम को बनाता होगा, आज भी वो इसी तरह से इंसानों को मोल्ड करके अपना नूर उसके अंदर फूंकता होगा इंशाल्लाह. Very good question. Even though this was not today's class question, but I could not resist. It was a really good question. And I think we are there. We can understand this now. Inshallah. Thank you, Brother. Any other question?